अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज के इस वेबिनार में, जो कि आप सब जानते हैं कि मॉडर्न एस्पेक्ट ऑफ एफॉरेस्टेशन पर है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर है, आज आप इन दोनों चीज़ों को डीपली स्टडी करेंगे एंड वी हैव क्वाइट एक्सपर्ट पीपल्स इन बोथ ऑफ दीज डोमेन्स दैट माइट बी एबल टू गिव एन इम्पैक्टफुल एंड प्रैक्टिकल अप्रोचेस रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स। तो आज का ये वेबिनार PNL ने अरेंज किया गया है, जो कि प्लांट न्यू लाइफ एक सोसाइटी है, एक कम्युनिटी है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग पीपल with plants which they really deserve. For example, all the people around us जो कि कहते हैं कि हम पौधे लगाने चाहते हैं but unable to provide unable to achieve plants in their stakeholders or in their areas, उन लोगों को हम प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के ज़रिए और दूसरे इस तरह के प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए, ताकि वो प्लांट्स उगा सकें। और आप, हमारी कम्युनिटी जो है, हमारी यही अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें, ताकि जिस इलाकों के आप स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा सकें। और ना सिर्फ हम PNL आपको प्लांट्स प्रोवाइड करेंगे बट ऑल्सो आपको मेंटेनेंस की कुछ ट्रिप्स और टेक्निक्स भी बताएंगे, और उसके लिए हम आए दिन आपके साथ सेशंस करेंगे, वेबिनार्स करेंगे विच हैव एक्सपर्ट पीपल्स विद यू। आज का सेशन हमारा मॉडर्न एस्पेक्ट्स ऑफ एफॉरेस्टेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर है, जो कि मोस्ट ऑफ कंसर्न आर कि हम क्लाइमेट चेंज के साथ कैसे कम्पीट कर सकते हैं। आज इस साल हमें इस बात से ख़ास तौर पर नुमाया पता लगा है कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ गर्मी का नाम नहीं है। हमारी इरेगुलर रेनफॉल कितनी ज़्यादा हमें डैमेज कर सकती है, वी हैव ऑल्सो नोटिस दिस एंड वी ऑल्सो केम टू रियलाइज कि हर टाइम प्लेजेंट वेदर रहना जो है, इट इज़ नॉट जस्ट अ गुड थिंग फॉर आवर यील्ड ऑफ वीट एंड अदर क्रॉप्स। इन सब चीज़ों को आज मद्देनज़र रखते हुए आज हमारे गेस्ट स्पीकर जो हैं वो है डॉक्टर ज़ियाउल हक साहब और डॉक्टर अरफान अहमद साहब। मैं इनके बारे में ब्रीफ सा डिस्क्रिप्शन आपको ज़रूर दूंगा, बट उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं जनरल सेक्रेटरी ऑफ PNL अमन खोखर बात कर रहा हूं और आई हैव वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ PNL, और हमारा यही गोल रहा है कि हम प्रोजेक्ट कर सकें उन लोगों के लिए जो प्लांट्स वगैरह लगाना चाहते हैं बट दे आर अनएबल टू फाइंड द राइट प्लांट्स एंड अनएबल टू ग्रो देम इन देयर कम्युनिटीज़। तो हम कम्युनिटीज़ को ज़्यादा ग्रीन करना चाहते हैं और पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज के साथ कम्पीट करने के लिए प्रॉपर वेपनाइज करना चाहते हैं, so that we might be able to provide our generation the better future they really deserve. So I will just introduce our speakers. The first speaker is Dr. Arfan Ahmed, which is currently working as an associate professor at University of Agriculture, Faisalabad, और ये chairman है of Department of Forestry and Range Management, and he is quite the most senior person I have came to realize in the forestry department. इनकी जो डोमेन है वो है फॉरेस्ट इकोलॉजी, फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन, एंड दे हैव ऑलमोस्ट पब्लिश्ड 70 रिव्यू आर्टिकल्स, बुक चैप्टर रिपोर्ट्स एंड पॉपुलर magazines, and also served as a resource person at an OIC at training research at agroforestry. Assalamu sir. वालेकुम सलाम। आई होप सर ये आपका पूरा एक्सपीरियंस तो नहीं था और ना ही मैं आपकी पूरी डोमेन बता सकता हूँ, बिकॉज आई थिंक सो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। नहीं, थैंक यू, इतना बताने की जरूरत भी नहीं है, काफ़ी है इतना। ठीक है सर। अब सर आपकी जो डोमेन है वो यकीनन हमारे टॉपिक के साथ बहुत ज़्यादा कोरिलेट करती है। एंड नाउ आई एम लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेकंड को स्पीकर विच इज़ डॉक्टर ज़ियाउल हक साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी ज़ियाउल साहब से पूछ रहे हैं? नहीं सर, यस सर, ज़ियाउल साहब से। मुझे आ रही है आवाज़ आपको क्लियर? ठीक सर। अस्सलाम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम सर आपकी मैं ब्रीफ से डिस्क्रिप्शन देने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा सर, आई हैव नेवर सीन सच अ फ्रेंडली टीचर्स बिफोर। जितने आपने हमारे साथ कोऑपरेट किया है, और आई एम जस्ट क्वाइट एस्टोनिश्ड कि इतने इनर्जेटिक टीचर्स और इतने यंग टीचर्स हमारे डिपार्टमेंट में एग्जिस्ट करते हैं कि वो हमारी हर बात पर एक्टिव हो जाते हैं। एंड आई एम ऑल्सो रियली थैंकफुल फॉर डॉक्टर अरफान साहब, मीन दैट आई वॉज रियली कंसर्न कि मैं इतने चेयरमैन के साथ जा रहा हूँ,
वेबिनार के लिए आएंगे या नहीं, बट दे हैव शो मी सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस विद देम। और उन्होंने पहली बार में ही मुझे हाँ का जवाब दिया, एंड आई वाज रियली हैप्पी टू नो दैट कि वो हमारे स्टूडेंट्स के मैटर्स में इतना ज़्यादा इफेक्टिवली अपनी गाइडलाइन प्रोवाइड करना चाहते हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट ज़ियाउल हक साहब. He is currently working as assistant professor at UAF and also as an active advisory board member of Society of Young Agronomists. और इनकी 30+ publications हैं, and recently has a research work and gained the best presentation award at International Weed Science Conference at Bangkok. असम सर, चलें अब मेरे ख्याल से आप लोगों का इंट्रोडक्शन और सब चीज़ों के बाद इट वुड बी द बेस्ट थिंग टू गो टुवर्ड्स द टॉपिक. सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम डॉक्टर अरफान अहमद. सर, काइंडली आप बता सकते हैं कि व्हाट वुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ मॉडर्न एफॉरेस्टेशन रियली मींस, व्हाट इज द अर्बन फॉरेस्टेशन? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं एग्रोनॉमी और फॉरेस्ट्री के साथ तल्लुक रखते हैं, बट स्टिल दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इट. Thank you very much. It means you want to discuss about urban forestation or urban forestry. But before starting the importance of urban forestry, I think it's really important. What is urban forestry? Basically, when we discuss urban forestry, it's we can say it's a type of social forestry. And first of all, what is social forestry? Actually, we want to grow trees everywhere, but 4 to 5 points will be the major focus when we discuss social forestry. What is social forestry? When we say he's a very social man, it means he want to do something good for other people. It means when we discuss social forestry, it means social forestry is by the people, for the people, by the government, for the people. It means we have to plant trees for benefiting the community. Or there are 4 to 5 major types of social forestry, and urban forestry is one of them. We can say agroforestry, farm forestry, social forestry, community forestry. And urban forestry and community forestry are really very important when we discuss the importance of afforestation and reforestation, because normally when we discuss afforestation and reforestation, normally we discuss the importance of natural forests, just like in case of Pakistan, because we have variety of climates. We have mangrove forests, we have coastal regions, we have deserts, we have semi-mountainous regions, we have world's highest peaks in Pakistan. So that's why we have variety of forest types. But unfortunately, we have variety of forests, but unfortunately we have forest area or forest cover is very less, because forest cover is just 1.9 or 2%, near about 2%, according to the latest FAO reports or United Nations reports. So when we discuss this less area of Pakistan, the only way to promote trees or afforestation or reforestation programs, we have to involve the community in such programs. And when we involve community, these programs are called as this program is called as community forestry or urban forestry. So in case of urban forestry, there are so many ways that we can plant trees in urban areas, but we have to be very careful when we plant trees in urban locations, urban areas or peri-urban areas, because you can observe that Faisalabad, we are sitting in Faisalabad. First, Faisalabad is the third largest city after Lahore and Karachi. But when we discuss Islamabad, Islamabad is more planned city as compared to Faisalabad, Islamabad or Karachi, and it's more green because they have planted trees or shrubs or ornamental plants with proper planning. But in other regions, in small cities or towns, there is no proper planning. So when we want to plant trees, especially in case of urban areas, we have to plan, because there are sewerage lines and there are high voltage transmission lines in urban areas. So first is the planning, where we want trees, which type of trees or which type of shrub or which type of plant we want to grow there. So that's why in case of urban areas we have green belts, we have some parks, like in case of Faisalabad or Lahore, we have this Chinna Garden. Then there are some parks which are under the control of PHA, and then some parks like in case of Faisalabad there is Gatwala Park, which is under the control of Forest Department. So there are different ways that we can contribute in social forestry, or we can plant trees in urban areas. So we can plant trees along canal sides, we can plant trees along roadside, we can plant trees in green belts and in parks.
ओके सर। सर क्या कोई इज इट सक्सेसफुल क्लियर? एग्जांपल आप देख सकते हैं? यस सर, आपने जितना सिंपल वर्ड्स में बताया, आई थिंक सो नो वन रियली कंसर्न्स अबाउट द फैक्ट कि सोशल फॉरेस्टेशन क्या होती है, बट सर कोई इसकी सक्सेसफुल एग्जांपल दे सकते हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स ज़्यादा अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेंगे। देखिए सक्सेसफुल एग्जांपल्स, आई थिंक ज़ियाद साहब बैठे हैं, आई थिंक ज़ियाद साहब ने पीएचडी चाइना से की है। यस सर। हाँ, जब हम सक्सेसफुल एग्जांपल्स की डिस्कस करते हैं ना, आजकल की जो मॉडर्न वर्ल्ड में ये वो सबसे हमें घूमने का मौका मिला, यूरोप भी गए, इधर उधर काफी कंट्रीज में, अफ्रीका को भी देखने का मौका मिला, और पाकिस्तान में तो हम डेफिनेटली हैं। लेकिन मेरे ख्याल से सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है इन केस ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री, वो नंबर वन चाइना है। मुझे 2-3 दफा वहां पे जाने का भी रिसेंटली भी, क्योंकि मैं कोई चाइनीज के साथ, ये ग्वादर में भी हम काम कर रहे हैं, वहां पे भी ये अर्बन फॉरेस्ट्री पे और ग्वादर पोर्ट के साथ साथ ग्रीन बेल्ट से बन रही है, हम उस पर काम कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो मोटिवेशन मुझे नजर आई वो चाइना में नजर आई। इन केस ऑफ अर्बन फॉरेस्ट्री, वो सिर्फ दरख्त लगाते नहीं है, वो आज से 100 साल बाद का सोचते हैं कि दरख्त लगाना हमने क्यों है। उन्होंने कोई ब्रिज नहीं छोड़ा जिसके नीचे उन्होंने प्लांटेशन नहीं की, उन्होंने कोई रोड के साथ फुटपाथ नहीं छोड़ा जिसके साथ उन्होंने और प्लांटेशन कैसे की है, ट्री लगाया है प्रॉपर, उसकी जो जिस तरह हम एग्री आप एग्रोनॉमी में एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस एंड कल्चरल प्रैक्टिस बोलते हैं, वी कॉल दिस प्रैक्टिस इन फॉरेस्ट्री एज सिल्वी कल्चरल प्रैक्टिस। उन्होंने जिसको प्रूनिंग, थिनिंग, टॉपिंग, प्लॉटिंग, या डिफरेंट टर्म्स हैं जो हम फॉरेस्ट्री में यूज करते हैं, तो उन्होंने प्रॉपर उसकी टॉपिंग की है, उसको शेप दी है ट्रीज को। और शेप क्यों दी है कि वो एक तो वो उसकी ज्यादा हाइट पे ना जाए, अगर वहां पे कोई ऐसी कोई इलेक्ट्रिक या वायर गुजर रही है वो भी प्रॉब्लम ना हो, उनकी वो वहां पे बिल्डिंग्स डिस्टर्ब ना हो। साथ इसलिए किया कि नीचे से लोग जो गुजर रहे हैं वो साए में भी गुजरे, धूप में, धूप धूप वगैरह है तो अगर लेटेस्ट में सबसे बेस्ट मैंने जो प्रैक्टिस देखी हैं, जो मैंने अभी तक जहां जितना मैं घूमा हूँ, मेरा ख्याल है चाइना इज लीडिंग इन केस ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस। और इसके अलावा सिर्फ सोशल फॉरेस्ट्री में, अर्बन फॉरेस्ट्री नहीं, उन्होंने फार्मर्स को भी इसमें मोटिवेट किया है। और सबसे ज्यादा मैं फर्स्ट टाइम 2012 में गया, तो ये तो आज से 10-12 साल पहले की बात है, उसके बाद उन्होंने बहुत इस पे काम किया है। उन्होंने फार्मर्स को जो उनकी डिमांड्स ओरिएंटेड जो है फॉरेस्ट्री, उसके ऊपर लेके आए हैं। मसलन हम जहाँ पे ट्रेंड नहीं है हमारा बांस लगाने का, बैम्बू लगाने का, उन्होंने उस पे इतना काम किया, और वो उसकी यकीन करें एक एक चीज से ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हैं हम सोच भी नहीं सकते। और उसका फाइबर फाइन क्वालिटी का है, वो उसको इंडस्ट्री में लेके जा रहे हैं, उससे गारमेंट्स बना रहे हैं, उससे फर्नीचर बना रहे हैं। तो उन्होंने अगर वो उनको प्रमोट किया तो साथ साथ इंडस्ट्रीज भी डेवलप की हैं, और लोगों को बताया है कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन की अब बात करते हैं, अब कार्बन क्रेडिटिंग की बात हो रही है, तो लोग ऐसे बिजनेसेस को ले रहे हैं। तो दुनिया में तो अगर मैं चाइना, अगर पाकिस्तान में भी अगर बात करें तो रिसेंटली हमारे हम पॉलिटिक्स को डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो अभी रिसेंटली आपके यहाँ पे, लेकिन किसी ने कुछ स्टार्ट तो किया, ये जो ट्री प्लांटेशन का पाकिस्तान में 10 बिलियन ट्री सुनामी है, डेफिनेटली इसने इसने चेंज किया है लोगों के माइंडसेट को। अब मैं अपने विलेज में जाता हूँ, तो मैंने वहाँ पे एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, वो अपने गाँव में कब्रिस्तान में प्लांट्स लगाने का। तो वो भी एक सोशल फॉरेस्ट्री है, हमारे पास हमारे ग्रेवयार्ड्स खाली पड़े हैं, तो वहां पे ट्री प्लांटेशन की जा सकती है। आपके बहुत सारे ऐसे हैं। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हमसे आते हैं वो पौधे लेने तो आते हैं, लेकिन मेरा पहले उनसे सवाल यही होता है कि आपने पौधा लगाना है तो इसको बचाना कैसे है। तो चाइना ने उसको लगाया भी, उसको बचाया भी, और अपने जो उनके मेच्योर ट्रीज हैं वो उनको भी सपोर्ट देते हैं, बचाते हैं। तो अभी तक मुझे चाइना इसमें नंबर वन लगा है, अगर अगर वर्ल्ड लेवल की एग्जाम्पल्स की बात करें। Agreed. और और सर एग्जाम्पल के साथ साथ आप हमें बता सकते हैं कि अगर हम इसे इंट्रोड्यूस कराने के लिए, हम अगर कराने लगे हैं, तो व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द बैरियर्स कि हम सोशल फॉरेस्टेशन को अपने मुल्क में ला सकें, तो कौन से हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे? देखें, सबसे जो बड़ा बैरियर हमारे यहाँ पे है ना, कोई भी काम हम स्टार्ट करते हैं तो हम कोई हमारे प्रॉब्लम यह है कि लोग इतनी जल्दी इसको एक्सेप्ट नहीं करते। हमारे यहाँ पे तनकीद पहले नंबर पे होती है, उसकी पॉजिटिव चीजें हम बाद में देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम उसमें वो पार्टीजम देखने लग पड़ते हैं, पॉलिटिक्स देखने लग पड़ते हैं, तो ये अनफॉर्चुनेटली है। ये आप लोग एग्रोनॉमिस्ट बेस्ट जानते हैं, जब ये पाकिस्तान में ये जो फर्टिलाइजर का यूज शुरू हुआ, पेस्टिसाइड का यूज शुरू हुआ, तो फार्मर इतनी जल्दी इसको अडॉप्ट नहीं करते थे। वो बड़ी मुश्किल से बेचारे एग्रीकल्चर ऑफिसर उनको मोटिवेट करते थे। इस तरह ये फॉरेस्टर है, जो फॉरेस्ट फील्ड में काम कर रहा है, इसकी जॉब बहुत टफ है एज कम्पेयर टू, अगर एग्रीकल्चर की बात करें, क्योंकि ये वीरान एरियाज होते हैं, जंगल है, वहां पे काम करना इतना आसान नहीं होता। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारे जो प्राइमरी एजुकेशन है ना, स्कूल लेवल पे, हम वहां पे अपने बच्चों को इन चीजों की तरफ मोटिवेट नहीं करते हैं। ये मोटिवेशन वहां से स्टार्ट होती है। हम देखें, हम ये नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं, वहां पे वो कल परसों से एक बड़ी वो वीडियो चल रही है, और चल रही है कि वो
आई थिंक 2 फॉरेनर, आई डोंट नो कि वो ये कहाँ से, हॉलैंड से कहाँ से, वो हम जो हमने वहां पे पूरा करके फेंका हुआ है, बेचारे शापरों में डाल रहे हैं, बैग्स में डाल रहे हैं उसको साइड पे। तो हमारी ये ट्रेनिंग नहीं है। सबसे बड़ा जो है, हमें जो जो प्राइमरी लेवल से हमें एजुकेट किया जाना चाहिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मुझे याद है वैसे, आजकल तो ट्रेंड ये है कि प्राइवेट सेक्टर से लोग पढ़ के आ रहे हैं। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, और मैंने गवर्नमेंट स्कूल में उस टाइम पे वो एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट को लिया था, बाई चांस लिया गया जैसे भी लिया। तो उस टाइम हमारे स्कूल वालों ने हमें कहा था आपने ट्री प्लांटेशन करनी है। तो मेरे हाथ का लगा हुआ पौधा आज से आई 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 थिंक ये 92 93 की बात है, तो अभी तक वो स्कूल में लगा हुआ है। मैं जाता हूँ तो मुझे देख के वहां पे खुशी होती है। समनाबाद के पास मेरा स्कूल था। तो वो जो उस लेवल की ट्रेनिंग है वो इस स्टेज पे होनी चाहिए, प्राइमरी लेवल पे, नर्सरी लेवल पे बच्चों को जो ट्रेन करना चाहिए। जब हम कंपैरिजन करते हैं हमने एजुकेशन सिस्टम में, तो इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो यही है। तो मेरा ख्याल ये वो स्टेज है जहाँ पे हमें मोटिवेशन मिलती है, लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए। और नंबर टू, इन सिर्फ लोग ना सिर्फ उनको ये बताएं कि ये ऑक्सीजन देते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्व करते हैं, तो लोग दरख्त नहीं लगाते। उनको थोड़े से इनके इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी बताएं। ठीक है। और आजकल तो बहुत ज्यादा ट्रेंड है, मेरे पास पाकिस्तान में ऐसे फार्मर भी हैं जिन्होंने एग्रो फॉरेस्ट्री को अडॉप्ट किया और 700 800 एकड़ पे वो सिर्फ ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं। ये चिन्योट के करीब है, पाकपतन के करीब है। तो लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस का पता चल रहा है, क्योंकि चिपबोर्ड इंडस्ट्री आ गई है, मैस्टिंग इंडस्ट्री आ गई है, शटरिंग इंडस्ट्री है। तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जिनमें बड़ी अच्छी मार्केट में प्राइस मिल रही है। अच्छा सर, आपने यहाँ पर अभी एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में जिक्र किया, क्या आप बता सकते हैं डिफरेंस बिटवीन अर्बन फॉरेस्ट्री एंड एग्रो फॉरेस्ट्री? जी, अर्बन फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री डेफिनेटली देयर आर, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। अर्बन एरियाज में मैंने आपको काफी सादा अलफाज में मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया कि आई डोंट नो कि बच्चे किस डिपार्टमेंट से हैं, मे बी वो एग्रीकल्चर से हैं, वो इंजीनियरिंग से हैं जो बच्चे सुन रहे हैं। तो इसलिए इसको जरा सिंपल ही रखना चाहिए। तो इन केस ऑफ एग्रो एग्रो फॉरेस्ट्री बेसिकली इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। एग्रो, जब हम एग्रो की बात करते हैं ये ब्रॉडर सेंस में वर्ड लेते हैं। वैसे हम एग्रीकल्चर एग्रो मीन जिसे हम कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो एग्रो मीन जब हम लेते हैं, इट मीन्स प्लांटेशन ऑफ ट्रीज अलोंग विद एग्रीकल्चर क्रॉप्स, अलोंग विद पोल्ट्री, अलोंग विद आप इसमें जिस तरह ये सलाइन और वाटर लॉक्ड एरियाज में पॉन्ड बनाते हैं तो उसके साथ भी आप लगा सकते हैं, फॉर लाइफ स्टॉक। तो ये इसके डिफरेंट सिस्टम्स हैं जो वर्ल्ड वाइड हम फॉलो करते हैं इन केस ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री, जिनको हम एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम बोलते हैं, जिसमें हम ट्रीज लगाते हैं अलोंग विद एग्रीकल्चर क्रॉप्स। फिर एक सिल्वो पेस्टोरल सिस्टम है जिसमें हम पास्चर लैंड में साथ ट्रीज लगाते हैं। उसमें डेफिनेटली वो जो ग्रास लैंड है वो हमारे जो लाइफ स्टॉक हर्ड्स हैं उनको फॉडर प्रोवाइड करती है। फिर जो तीसरा मेजर है उसमें तीनों कॉम्बिनेशन है, एग्री सिल्वो पेस्टोरल। एग्री मीन एग्रीकल्चर क्रॉप्स प्लस सिल्वो मीन ट्रीज आप साथ लगाते हैं। पास्चर लैंड भी वहां पे है, साथ अपने लाइफ स्टॉक हर्ड भी रखे हुए हैं। और ये अगर आप अपने कल्चर को स्टडी करें तो ये चीजें हमारी बड़ी कॉमन थी, बल्कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट आई है। हम हर चीज दफा ना, हम जब बात करते हैं एग्रीकल्चर को चीजों को नेगेटिव डिस्कस करते हैं। तो हमारे वाइस चांसलर भी जब हम कंपैरिजन करते हैं वो कहते हैं यार पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया, तो हर चीज को हम नेगेटिव पॉइंट ऑफ से डिस्कस ना करें। जब पाकिस्तान बना था 1947 में, हमारे फार्म लैंड पे नंबर ऑफ ट्रीज बहुत कम थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम फार्मर को पता चला कि इससे हम इनकम ले सकते हैं। तो उन्होंने स्पेशली अगर हम 4 5 ट्री स्पीशीज का मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूंगा, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट शीशम है पहले नंबर पे, फिर किकर है, फिर पॉपुलर है, सिमल है। इस तरह अभी रिसेंटली पिछले 5 10 साल से आपको मतलब मेडिसिनल प्लांट्स की बात हो रही है, मोरिंगा है जिसे हम सांजना बोलते हैं। तो ये 7 8 स्पीशीज ऐसी हैं जिनको फार्मर्स ने लगाया है। और मेरे पास ऐसे फार्मर हैं जिन्होंने आफ्टर 4 to 5 years या आफ्टर 6 to 7 years 20 to 30 लाख रुपीज अदर देन एग्रीकल्चर क्रॉप इस जस्ट इससे अर्न किया है। गुजरा में एक जिम्मेदार था, उसने जस्ट सिंबल आपके पूरे वाटर चैनल्स पे इस पे लगाया होता और साथ वो मेज लगाता था। उसने जब वो बैंक जॉब भी करता था, उसने जब वो उसको सेल किया ऑलमोस्ट वो मोर देन 50 लाख प्लस का था जब सिंबल उसने सेल किया। तो ये हम मोनोकल्चर से निकलेंगे। अब देखें, अब रिसेंटली आपको फार्मिंग में नए नए ट्रेंड नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये जीवन लोग लगा रहे हैं, हम लोग इस पर बड़ी तनकीद भी करते हैं, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली देखा लोगों ने इससे पैसा कमाया। बात तो अर्निंग की है ना, अर्ली स्टेज पे लोग इससे बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। और यकीन करें जो कमा रहे हैं उनको भी यकीन नहीं आ रहा कि हम इससे इतना कमा रहे हैं। इस तरह टनल फार्मिंग आई थी, एक न्यू ट्रेंड था। तो ये एग्रो फॉरेस्ट्री की तरफ लोग आ रहे हैं। इसमें हमने बस जस्ट ये सिलेक्शन प्रॉपर करनी है कि राइट कम्बिनेशन आप सिलेक्ट करें। इसकी डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं वर्ल्ड में, जिसको हम एलए क्रॉपिंग बोलते हैं, ये टोंगिया सिस्टम है, डिफरेंट एग्रो फॉरेस्ट्री की प्रैक्टिसेस हैं। ये बेसिकली वर्ल्ड के जो ट्रॉपिकल रीजन हैं वहां से ये बेसिकली कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था, जिसको हम वहां पे जब लोगों ने देखा कि जमीन फर्टाइल है, लोगों ने ट्रीज
साथ क्रॉप्स लगानी शुरू की। फिर उसके बाद एक नुकसान ये भी हुआ कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन आ गई, तो लोगों ने दरख्त काट के क्रॉप्स लगाना शुरू कर दी। और दुनिया में सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को ही है। और सबसे ज्यादा असल में दुनिया में जो बड़ा बम है वो पॉपुलेशन, आपको पता है। और एशिया माशाल्लाह इसमें लीड कर रहा है। यस सर, थैंक यू सर। आपने लिटरली हर एक एक्सपेक्ट को टच किया है, और मॉडर्न एफॉरेस्टेशन को ऑलमोस्ट इतनी डीपली आपने एक्सप्लेन किया है। आई डोंट थिंक सो कि एक फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट की इतनी डीप सेंस हम किसी और से ले सकते थे सर। थैंक यू। बाकी सर, बिल्कुल। अब मैं डॉक्टर ज़ियाउल साहब की तरफ आऊँगा। सर, नाउ वी गेट द पर्सपेक्टिव ऑफ फॉरेस्ट्री ज्यादा के डिपार्टमेंट। बारे में मैं भी और कुछ अब कहना चाहूँ। ज्यादा को मैं स्टूडेंट लाइफ से जानता हूँ, माशाल्लाह बड़े एक्टिव है। आपने पहले इनकी तारीफ कर दी है, मैं इनको स्टूडेंट लाइफ से जानता हूँ। माशाल्लाह शुरू से बड़े चार्मिंग और स्माइलिंग फेस है इनका जी। और ये यंग जो माशाल्लाह एग्रोनॉमिस्ट है, बड़े एक्टिव है माशाल्लाह। यस सर। Thank you so much, सर sir, मेरा for your words. इरफान साहब को डेफिनेटली मैं ड्यूरिंग माय अंडरग्रेजुएट तब से जानता हूँ, एंड ही इज लाइक माय मेंटर एंड ही इज लाइक माय मोटिवेशन एज वेल. ओके सर। सर इट कम्प्लीटली शोज कि आपकी इंस्पायरेशंस एक दूसरे के साथ कितनी कोरिलेट करती हैं। सर, थैंक यू. डॉक्टर ज़ियाउल हक साहब, सर आपसे मेरा है कि व्हाट इज द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्रोनॉमिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ अर्बन फॉरेस्ट्री। हमने फॉरेस्टेशन डिपार्टमेंट से तो Actually, अंडरस्टैंड कर if we talk about agronomy, that would be quite different. लेकिन अगर हम बात करें as a plant scientist की, तो then I can talk about it. But before talking the general discussion, I think I can go for a little PPT, a quick PPT, then we'll go for the question answer session. So it would be better. First we'll go for यस the सर। PPT, then we can go for the question answer and session. Will that work? यस। Okay, then I will share my PPT. Just let me know if it is visible or if it is okay. यस सर, इट इज विजिबल। Okay, so modern aspect of afforestation and sustainable development goals. I'll go for that, and I will go with the contents like the challenges and solution for afforestation project on a large scale. I will talk about the things about related to Pakistan only. So the potential of afforestation to increase the tree cover and combat climate change, and the collaborative effort between public and private sectors to achieve afforestation goals. So we'll go one by one in these contents. But before going to the content, I will talk about the Sustainable Development Goals. I think most of the students will be aware of the Sustainable Development Goals of the UN, and those are the 17 goals. The first one is the end poverty and hunger. Second one is the end hunger. So those will be related to I think every aspect, every goal indirectly. So that those are related to agriculture as well. But if we talk about the forestry or afforestation, then the goal number three talk that address directly to the afforestation, that is the we have to take urgent action to combat climate change and its impact. So everyone is aware of the role of trees in capturing carbon dioxide. So if we are going to capture carbon dioxide in the tree form, then what will happen? We are going to decrease the carbon dioxide concentration in the environment. So decrease carbon dioxide concentration mean we are mitigating the global warming. Then the goal 13 of the SDGs by UN, that make cities and human settlement inclusive, safe, resilient, and sustainable. So as you can see in the picture, it is clear that the human settlement, they can be more greener. Even now there is a concept of green buildings as well. So these pictures are the proposed project which will be completed soon in the Switzerland. So these are the pictures from that proposed project. So now the building will be more greener. Okay, coming back to the topic. So, however, afforestation project on a large scale in Pakistan, that face many challenges. We'll name a few here. Like first one is water scarcity. Like as of 2022, the annual per capita water availability in Pakistan that stands at 908 cubic meter. So, but the standard for water threshold at the international level, that is 1700 cubic meter per person per year.
So we have very less fresh water available. So this availability of water for afforestation project is a major challenge, as it requires a significant amount of water for successful tree growth as well. If we talk about the especially the urban forestry, then the problem of deforestation is quite severe. Maybe most of the people are aware of it. So here are some data that Pakistan's deforestation rate is approximately 2.1% per year, which is one of the highest in Asia. So we are leading in Asia in the deforestation rate. Okay, so Pakistan has lost about 40% of its forest cover in last 2 decades. So we are losing trees, we are losing our forests. Then there's another problem, a big problem: climate change and extreme weather events. Everyone is aware of the extreme weather events nowadays. I will name a few. Then flooding, like the flooding in 2020 and flooding in 2022, that disturbed over 2.8 million acre of agricultural land, that affected 33 million people, and that caused about 1,300 calamities as well. So, talking about the heat wave that happened in 2019 in Jacobabad, Sindh, when the temperature reached up to 51.2 degrees Celsius. And in the same year, in the Karachi, there were over 65 people were died due to heat wave. Then talking about the glaciers, we have a quite big glacier. We used to had a quite big glacier cover, but the glacier melting rate in Pakistan is about 34.1 meters per year. So this melting rate contributes to increased water flow in the rivers during summer months, which can lead to flooding and water resource management challenges. Then comes lack of awareness and participation. So in the survey by Pakistan Forestry Department, about 20% of the respondents that recognize the role of forest in mitigating climate change, conserving biodiversity, and providing ecosystem services. So it's clear that about 80% people they don't know the role of forestry or the forest in climate change mitigation or anything related to ecosystem services and biodiversity. So the low participation is evident in the relatively low number of individuals actively engaged in the tree plantation drives. Then the big thing, limited financial resources. So in the fiscal year 2021-22, only 0.08% of the total budget this year was allocated for the forestry in Pakistan. On the other hand, the limited international funding, we have a limited international funding, and we were unable to fetch the international funding for major international funding for afforestation projects. Then institutional capacity. This is another big problem here. So limited institutional capacity, it means like lack of skilled personnel, technical expertise, and resources within the relevant government departments and agencies. Then lack of coordination. That means that between the forest department, agriculture department, irrigation department, and local government bodies. Then fragmented institutional structure, this can lead to the coordination challenges. So because every department, like forestry department at government level, irrigation department at local government, they are working separately. They are fragmented. So this fragmented work can lead to coordination challenges. Then it can overlap the mandates and inadequate collaboration between different institutes. Then the hindering the efficient implementation of the afforestation projects as well. But uh, how to address the challenges of afforestation project in Pakistan? There can be several solutions. Going through the solution, we can go for reforestation and land rehabilitation. So we can focus on the rehabilitation, the degrading land, and reforesting the area that have experienced deforestation already. Then climate resilient species selection, because climate change is evident nowadays. Everyone is experiencing that. So the prioritizing the selection of tree species that are well adapted to local climatic condition and have high tolerance to drought, temperature fluctuation, and pest. We should select those species. Then the public awareness and participation. So we have to launch the awareness campaign to educate local communities about the importance of afforestation and its environmental benefits. And encourage community participation through tree plantation drive, involvement in maintenance activity, and creating sense of ownership. So I will talk about a little bit about it. So this is what we are doing today. We want to make the awareness in the public, especially in the university students, and we want to ensure their participation in the projects related to afforestation. So that's why we are having the today's session. Then public-private partnership, of course, is necessary. So foster collaboration between government, private sector, NGOs, and local communities to pool resources, expertise,
funding for large-scale afforestation projects. Okay. Then the sustainable financing mechanism. So the financing mechanism must be sustainable. We have to explore the innovative financing mechanisms such as the carbon credit, payment for ecosystem services, and green bonds to attract the investment for afforestation projects. So several countries have already started the carbon credits. Mean if you are releasing less greenhouse gases in the environment, they are going to give you credit. Then the payment there are about the market of payment of ecosystem services are about 33 trillions. This is the average value. This can be much more than that. And World Bank have created the green bonds. Mean if you are working in the climate resilient sector, mean if you're working in the sector which is combating the climate change, and afforestation is a major part of that climate change. So they issue you the green bond. And after World Bank, several European banks, they have started the green bonds as well. So you can earn the credit if you are going to mitigate the climate change through afforestation as well. So these mechanisms can provide financial incentives to the individual and organization involved in the afforestation, thereby ensuring the long-term financial sustainability. So long-term financial sustainability, of course, that will come with the sustainable financing. So there are certain mechanisms which are sustainable for financing the afforestation projects, like namely the carbon credit, payment for ecosystem services, and green bonds as well. Then the multi-purpose afforestation, like Dr. Irfan Rafsal, sorry, Dr. Isa was talking about the afforestation and agroforestry. So we have to promote the concept of multi-purpose afforestation by integrating tree planting with the other activities such as agroforestry, then watershed management and biodiversity conservation. So this approach can enhance the socio-economic benefit of afforestation projects while addressing the multiple environmental challenges. Uh, okay, so these were the some suggested solutions, and this can be implemented for the successful agroforestry or afforestation, not only agroforestry, afforestation in the Pakistani scenario. Okay. Yes, sir. It's a wonderful presentation, and Just hold on. Last two, three slides are there. These are kind of an important one. So okay, sir. potential. What is the potential of afforestation to increase the tree cover and combat the climate change? So why to go for the tree cover? Because because trees can sequester carbon dioxide, and that can mitigate the climate change. So agroforestation that plays a crucial role in carbon sequestration and helping to mitigate climate change by removing carbon dioxide from the atmosphere. So these trees can absorb carbon dioxide through photosynthesis and store it in their biomass and the soil. So if the carbon dioxide is decreasing in the environment because trees are absorbing it, then we are decreasing the greenhouse gases. So carbon dioxide is one of the potent greenhouse gas which is increasing the temperature of our Earth's crust. So, according to a study in the journal Nature, increasing global forest cover by 2025, 2050, sorry, through afforestation that could potentially sequester up to 205 gigaton of carbon that can significantly contribute to climate change mitigation efforts. Then, furthermore, afforestation or tree can provide ecosystem services like the increasing tree cover through afforestation can help regulate temperature, like urban forestry. If your cities are more green, then temperature of your city your cities will be less hot, and you can feel that. The people from the UAF, they from the University of Agriculture Faisalabad, they certainly know that whenever we enter in the university from the outside city, you can feel the temperature is less than the outside. So this is what tree can do. So this can furthermore it can reduce the intensity of heat waves, provide shade, thereby improving local microclimate and enhancing resilience to communities and towards the climate change impacts. Okay, so now we have talked enough about the things. Like now, what are the collaborative efforts between the public and private sectors to achieve the afforestation goals? Uh, I will talk about the efforts made by the government sector, then private sector, then there are the possibilities of the collaboration and the success stories of the collaborative work. About the government sectors, billion tree tsunami project, everyone is aware of that. We have planted about 1.18 billion trees, and with the cost of 14 billion rupees.
Okay, and the plantation were carried out in the multiple districts of KP, including Peshawar, Abbottabad, Soabi, Mansehra, Haripur, and Chitral. Okay, then I must mention the bone challenge here because it's a necessity to mention here. Bone challenge was the initiative taken by the Environmental Protection Agency of Germany and IUCN, and in that it is a global effort to bring about 150 million hectare of the world's deforested and degraded land into restoration by 2020, and about 350 million hectare by 2030. So what we did, what we have done in this sector, what is our success as a country level? So the KP is the first subnational entity to register with the bond challenge for the restoration of the forest in KP, and it is also the first entity in the world to complete the challenge, and that too in the half of the planned time. So we have completed that challenge, and in the half time already we have completed that bond challenge. Then more public level projects, including the 10 billion tree tsunami that was launched in 2018, Clean and Green Pakistan, and Miyawaki Forest that are dense, multi-layered forests in urban areas to maximize the benefits of afforestation in the limited spaces. Then, but a little bit shared in the forestation projects from the private sector as well, including the Roshan Pakistan, then including the Pakistan Business Council, Green Pakistan Initiative, and namely some NGOs which are involved in afforestation projects are the WWF Pakistan, then the Citizen Foundation, the Society of Environmental Education and Development, then the Saiban, and the Aman Foundation. Okay. So these are so we must not lose hope. There are some success stories as well. So we are working on that. And on the other hand, what is in our hand, we are spreading the awareness about the importance of afforestation. Okay, so these are success stories between the collaborative work between public and private sector. Changamanga Forest, everyone is aware of that. Sorry, and this is the collaboration between public and private sector. Similarly, the lower the Khyber Pakhtunkhwa, the tree plantation drive, those are collaborative work, and collaborative work in the third desert of Pakistan and the Margla Hills as well. Okay, so this is a special mention here. Just a second. Sorry. So these are some pictures from Nanjing, China, which I used to stay there in between 2016 and 2020. So these are the examples of urban forestry. So living examples. I used to live there. I used to walk in these streets. So if they can develop this type of urban forestry, why can't we? Of course we can develop, just the awareness and education that is necessary, and then we can achieve these goals. So you can see the almost all the roads, they are covered with the trees, so you can clearly feel that the temperature is less, there is more rainfall because of the trees. So these are the same Nanjing city. On the right hand side, this is the city center, almost city center. So you can see the tree cover in the city center as well. So they are never going to forget the trees. As Dr. Irfan Ahmed was telling, that China is leading in the urban forestry. Yes, it is leading. So these pictures are the evidence of that. So this is just about the one city, Nanjing, where I used to live. There are many examples in every city of the China. So we have to focus. We have to maybe adopt their model for the urban forestry. At least our cities will be less hotter then. Okay, thank you so much for giving me a quite a big time. Uh, if you have any question, maybe from the participant, I don't know. I don't think so. We are taking the question from the participants, but we can. So I'm open for the discussion. सर थैंक यू फॉर द प्रेजेंटेशन आई थिंक सो जितना डीपली आपने एक्सप्लेन किया है ऑलमोस्ट एवरी एक्सपेक्ट को आपने टच किया है एंड दैट्स रियली ब्रिलियंट अबाउट योर वर्क बट सर जब आपने वो अपनी चाइना वाली तस्वीर दिखाई आई वाज लाइक कि यूएफ की तस्वीर है नो, यूएफ की जो पिक्चर है वो मेरी पीपीटी के फर्स्ट पेज पे है, शायद आपने देखी होगी, बट यस सर यस यस, यूएफ का एग्जांपल आपके सामने ही है। मैंने बताया ना कि जैसे हम एंटर होते हैं बाहर से यूनिवर्सिटी के अंदर, वी कैन फील द डिफरेंस, द टेम्परेचर इज लेस, मे बी 3-4 डिग्री और 5 डिग्री लेस। You can feel the cool breeze in the summer when we enter the university. So this is because of the trees. यस And सर मैं यही कहता हूँ कि जब सर व्हेनेवर वी एंटर द यूनिवर्सिटी हमारा पहला क्वेश्चन ये होता है कि यार इतनी प्यारी यूनिवर्सिटी है, काश इस तरह के हमारे शहर भी होते।
क्योंकि Of सर course, of course. इतनी ज़बरदस्त, एंड आई थिंक सो इट इज़ आवर अपॉर्चुनिटी, वी नीड टू टेक एक्सट्रीम ओनरशिप, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, बिकॉज मेरे ख्याल से जहाँ के हम रिहायशी हैं वहाँ की हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम वहाँ पे पौधे लगाएं, और मेरे ख्याल से जो लोग स्टेक होल्डर्स होते हैं जिन इलाकों के, उनको बेस्ट पता होता है डेट व्हाट इज़ द बेस्ट प्लेस टू प्लांट अ ट्री, और Right. वो उन लोगों की केयर भी इजीली कर सकते हैं उन प्लांट्स की, जस्ट बाय spending a few minutes with the plant by giving it water and other some stuff। और हमने पीएनएल की तरफ से एक प्रोग्राम भी लॉन्च करना है आगे जाकर, जिसमें हम जो प्लांट आप लगाएंगे उस प्लांट को बकायदा रजिस्टर किया जाएगा आपके नाम से, बिल्कुल जिस तरह डॉक्टर इरफान साहब ने कहा कि जब आप कई सालों बाद उस पौधे को देखेंगे, देन इन आवर सिस्टम द प्लांट नेम वुड बी रजिस्टर्ड बाय योर नेम। और इसी तरह हमारे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम सारे तो नहीं ले पाऊंगा, बट We can take मैं few. Yes. यस सर, कुछ लोगों का क्वेश्चन है जो स्पेशली जो स्टूडेंट्स कंसर्न है फॉरेस्ट्री एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट में, दे आर आस्किंग हाउ वी कैन रियली स्टार्ट एफॉरेस्टेशन एट होम लेवल। दैट्स अ रियली टेक्निकल I क्वेश्चन। think should I answer this, or should will Dr. Irfan Ahmed will answer about this? सो व्हाट, आई थिंक सो जी व्हाट विल बी बेस्ट जी, फॉर क्वेश्चन क्या है जी? क्या सर, होम हाउ लेवल कैन पे वी क्या सवाल क्या था बच्चे की? सर हाउ कैन वी रियली स्टार्ट एफॉरेस्टेशन एट होम लेवल? Basically, at home level, we can't say afforestation or something like that because at home level, it depends. We are in a village, we are in a city, and which type of space we have available at home level. We can grow plants in no doubt in case of earthen pots. We can, if you have some bigger lawn, you're living in one canal or more area, you can plant some important. As you remember, when we were living in bigger houses in villages, almost at in each home there was at least one tree available. I still remember in my home in my village, and there was a neem tree. And neem tree is really very important because its medicinal importance and some other factors. But now there is no trend even at village level. That was very common. But we can grow some ornamental plants. We can grow at in the, if you can visit my town in my street, almost all people have grown some trees, and I am some trying at my level best to grow some trees like neem, some bakain, some flowering plants like amaltas. Amaltas is very important when we, you can observe in the hottest months of May and June, when there is no flower available in the town, you can see some very good flowers on the amalthas, cassia officiola, and some other plants like bottle brush, very beautiful red color flowering. So there are so many options, but it depends how much space is available at home level. सर अनदर क्वेश्चन इज कि ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या होता है फॉरेस्ट पर? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट हो रहा है अभी फॉरेस्ट की तो हम बात करते हैं, अभी पाकिस्तान के हम थोड़ा सा अगर डिस्कस कर लें, डॉक्टर साहब ने काफी इसको, इन्होंने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और बाकी चीजों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। अभी ये पाकिस्तान में अगर इसका इम्पैक्ट देख लें, अभी रिसेंटली देखें क्या हुआ है, सबसे जो बड़ा है, हमने इस पर एक चैप्टर भी सबमिट किया है कि फॉरेस्ट्री वे फॉरवर्ड फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इन केस ऑफ एग्रीकल्चर, कि फॉरेस्ट्री किस तरह रिस्क रिडक्शन को कम कर सकती है इन केस ऑफ एग्रीकल्चर। सबसे ज्यादा जो भी रिसेंटली नुकसान किया वो फ्लड्स ने किया है। अब इसमें हमारे हमारे प्लेन एरियाज देख लें, हमारे फॉरेस्ट देख लें, और हमारे जो स्पेशली देखें इन केस ऑफ सिंध में, अभी रिसेंटली सिंध गया भी था, और कराची और साथ साथ उसके हब वगैरह एरियाज में हमने फार्मर से भी डिस्कशन की, तो बहुत सारी एरियाज में अभी तक पानी कुछ इलाकों में खड़ा हुआ है। तो अभी पाकिस्तान के अगर जो इश्यूज हैं उनको सबसे बड़ा भी रिसेंटली डिस्कस करें, जो क्लाइमेट चेंज ने जो हिट किया है, अभी रिसेंटली जो फ्लड्स ने किया है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आप देखें, अभी डॉक्टर साहब ने ग्लेशियर्स का जिक्र किया, और मैंने भी आपको बताया कि पाकिस्तान लकीली वी हैव वैरायटी ऑफ क्लाइमेट्स अवेलेबल। हम पाकिस्तान में एग्रोइकोलॉजिकल जोन्स का भी डिस्कस करते हैं, तो ये ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, हमारे पास हाई हिल फॉरेस्ट पे प्रॉपर फॉरेस्ट कवर बहुत ज्यादा अच्छा अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से रन ऑफ ज्यादा होने की वजह से अल्टीमेटली एरोजन हैजर्ड बढ़ रहे हैं। जब एरोजन हैजर्ड बढ़ेंगे, अल्टीमेटली आपको पता है हमारे पास ऑलरेडी डैम्स कम है, तो हमारे डैम्स में जो मिट्टी आ रही है, जो सिल्ट आ रही है सारी, वो एक बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए। तो हमारे पास ऑलरेडी जो इलेक्ट्रिसिटी की जो है, अब अगर हम हमारे ये जो वाटर शेयर रीजन्स को डिस्कस करें, तो हमारे जो मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट हैं, ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट हैं, जैसे मरी को कह लें, हम आज़ाद कश्मीर को कह लें, स्वात का रीजन कह लें,
तो ये हमारे मेन एरियाज हैं केपी के और नॉर्दर्न ट्रैक में। तो अगर ये फॉरेस्ट यहाँ पे नहीं रहेंगे और वाटर का फ्लो ज्यादा होगा, और उसकी ट्रीज आपको पता है बैरियर काम करते हैं, तो उसकी वजह से इरोजन हैजर्ड बढ़ेगा। और डॉक्टर साहब ज्यादा साहब बेहतर जानते हैं कि अल्टीमेटली हमारे पास, हमारे जैसे मुल्क में, हमारे जहाँ पे एरिड टू सेमी एरिड कंडीशन है, नेचुरल रेनफॉल हमारे यहाँ नहीं है। तो मैं तो अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहता होता हूँ, बच्चों को कहता हूँ कि अगर ये हमारे पास ये केनाल वाटर की अवेलेबिलिटी ना हो, और ये कैनाल सिस्टम ना हो, और हमारे पास कई इलाकों में जहाँ पे पानी बड़ा अच्छा है, हम वर्टिकल ड्रेनेज ट्यूबर्स के लिए लेके दे रहे हैं, तो हम तो ये जो अच्छी अच्छी कार्टन पहन के सूट पहन के फिरते हैं और बच्चे बड़ा ये सिस्टम सारा, तो ये तो हमारे पास कुछ भी ना हो। तो ये तो अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर ये ग्लोबल वार्मिंग इस तरह हमें अफेक्ट करती रही, इस तरह फ्लड्स आए हैं, तो अल्टीमेटली ये हमारी एग्रीकल्चर के लिए डेफिनेटली बहुत तबाहकुन है। ओके सर, तो सर एक बाकी आपने और और एफॉरेस्टेशन की और जो जो आपने कैंपेन्स की बात की, तो हमारा जो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ऑलरेडी काफी हम काम कर रहे हैं। हम हमारी भी पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ फॉरेस्टर्स है, और हम अपने जो हम प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, और बाकी सोसाइटी के साथ मिलकर, तो हम अपने जो हमारे फार्म एरियाज हैं, हमारे फार्मर्स हैं, हमारे बहुत सारे, जिस तरह आपने सोशल फॉरेस्ट्री की बात की, तो हम बहुत सारे जो, जिस तरह डॉक्टर साहब ने प्रॉब्लमेटिक एरियाज की बात की, सलाइन साइज हैं, वाटर लॉग साइज हैं, तो ये जो बहुत सारी ऐसी ट्री स्पीशीज हैं जो जीरो फिटिंग है, जो हेलो फिटिंग है, ये तो ब्लेसिंग है उन इलाकों के लिए। जिस तरह अल्लाह ताला ने बीमारी हर एक की शिफा पैदा की है, उसका इलाज पैदा किया है, तो जमीनों के यस लिए सर। भी अल्लाह ताला ने इस तरह के पौधे और ये ऐसे प्लांट्स दिए हैं जो कि उनको बेहतर कर सकते हैं। तो हम इसमें ऑलरेडी भी काम कर रहे हैं। तो अगर आपकी सोसाइटी भी हमारे साथ कॉपरेट करेगी, तो हम मजीद इसको इंशाल्लाह फॉर्मल लेवल पे लेके जाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर आप के टाइम के लिए, और आपके यकीन करें इतनी होलिस्टिक अप्रोच के साथ चीज़ें एक्सप्लेन करना, इट वाज जस्ट योर एक्सपर्टीज़। आपने इतनी ब्रीफली हमें इतना सब कुछ, इतनी ज़्यादा एस्पेक्ट्स को इन टच किया, दैट्स रियली अ ब्रिलियंट आई थिंक सो वेबिनार। एंड मैं ये सबसे पहले थैंकफुल होना चाहूँगा बहुत सारे दूसरे डिपार्टमेंट्स और सोसाइटीज़ का जिन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेशन की और आज का वेबिनार हमारा पॉसिबल हो सका, जिनमें से एक ग्रीन यूथ मूवमेंट क्लब है जिनके साथ हम एसोसिएशन में हैं, और उनके साथ साथ सोसाइटी ऑफ यंग एग्रोनॉमिस्ट है, यूनिवर्सिटी हब पाकिस्तान है, एंड पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ फॉरेस्ट्री है। I'm really thankful for all the people who are involved in these societies and are directly or indirectly responsible for helping us to arrange this webinar. ये societies और platforms आप students के लिए बनाई गई हैं ताकि आप अपनी communities और societies को improve कर सकें। Thank you for your time, sir. And I hope this webinar would be a really informative for all the students who came from botany, agronomy, forestry, or even from genetics. As most of people are really concerned कि हम किस तरह effectively अपनी contribution दे सकते हैं, because यहाँ पर majority लोग जो आए थे बहुत सारे pessimistic होकर सोचते अच्छा हैं कि बच्चे, अगर पाकिस्तान। ये इजाजत दें तो ये टाइम है, तो एक बच्चे का कोई सवाल आ रहा है, पाकिस्तान में मियावाकी फॉरेस्ट प्लांटेशन पे काम क्यों नहीं हो रहा? अगर है तो मैं जस्ट फ्यू सेकंड में बता देता हूँ। Yes sir, ज़रूर बताएं। मियावाकी बेसिकली ये एक जापानीज टेक्निक है। मियावाकी एक बॉटनिस्ट था। उसने, हमने, अगर आप कुछ देखना चाहें तो कुछ लोगों ने काम किया भी, हमने अपने फॉरेस्ट्री रिसर्च एरिया में एक डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट लगाया है, प्लॉट लगाया है वहाँ पे। और ये पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी डिफरेंट साइट्स पे ये काम किया है। लेकिन असल में हमें हमें इस तरह के मियावाकी की इस तरह जरूरत नहीं है। मियावाकी का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या था कि जब जापान में बहुत सारी डिग्रेडेड लैंड्स हैं, तो वहाँ पे उसका Right. कॉन्सेप्ट ये था कि प्लांट्स को इतने डेंस लगा दिया जाए ताकि जो डिग्रेडेशन वहां पे हो रही है इसको कंट्रोल किया जाए। तो हमारे पास तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी लैंड है, हमारे पास वाटर की अवेलेबिलिटी किस तक ठीक है, तो हमें वो हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे नहीं है मियावाकी का। लेकिन हमें जो बाकी हमने बात की कि हमें अर्बन एरिया में, फार्म लैंड्स में, एग्रो फॉरेस्ट्री में, और एग्रो फॉरेस्ट्री में स्पेशली हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारी मोर देन 90% आपकी जो टिम्बर है, और मोर देन 60-70% फ्यूल वुड है आपकी एग्रो फॉरेस्ट्री से आ रही है। तो इसके हम डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट्स तो लगा सकते हैं जस्ट लोगों को दिखाने के लिए कि ये मियावाकी है। अदरवाइज हमें इस तरह की डेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास उतना पानी नहीं है, हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है। तो हमें उस चीज पे फोकस करना चाहिए जो कि हमारी जरूरत है। हमारी जरूरत है सबसे ज्यादा फार्म फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, अर्बन फॉरेस्ट्री इन केस ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। Yes, जी sir, and I think so. All these aspects were discussed in this webinar. और बहुत सारे स्टूडेंट्स का जी जो जी कई डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में है, कंसर्न है कि हम आखिर कैसे अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। देखिए, हम बीइंग अ पीएनएल एक सोसाइटी, अभी कम्युनिटी शुरू हुई है, हम अपनी कैबिनेट फॉर्मेशन की रजिस्ट्रेशन ओपन करने लगे हैं, सो दैट वी माइट बी एबल टू मेक यू पीपल टू वर्क फॉर योर कम्युनिटी।
और इसके साथ-साथ हम कई कोलैबोरेशंस के साथ है कम्युनिटीज़ के साथ जो आपको प्लांट्स प्रोवाइड करेंगी, आपको वेबिनार्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगी, आपको बाकायदा गाइड किया जाएगा कि आपको कौन-सा पौधा लगाना चाहिए, किस जगह लगाना चाहिए और किस तरह उस पौधे की केयर करनी चाहिए। और साथ हमने एक बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो कि करंटली हमारी यूनिवर्सिटी में नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में या फिर प्लान 9 में करंटली काम कर रहे हैं। हम उनके साथ भी कोलैबोरेशन कर रहे हैं और आप स्टूडेंट्स के साथ उनके हम कुछ सेशंस करवाएँगे, फिज़िकल इंटर्नशिप्स कराएँगे। जैसे अभी रिसेंटली नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में एक स्टार्टअप है जो कि हाइड्रोपोनिक पर काम कर रहा है। आपके स्टूडेंट्स के साथ हम उनकी कोलैबोरेशन कराएँगे और सेशंस करवाएँगे। And I think so all of these would be a really good profile for you to improve in your field and your society. Thank you for joining this webinar and I think so आपके पास last जस्ट week अगर yes कोई sir. मिल जाए, क्वेश्चंस काफी सारे स्टूडेंट्स के आ रहे हैं एंड दे आर रेलेवेंट। तो क्वेश्चन के लिए अगर ये जो व्हाट्सएप ग्रुप आपने बनाया है उसमें हम आंसर कर देंगे विद द टाइम। तो जो क्वेश्चन है अगर आप वहाँ पे पोस्ट कर दें तो हम उसका आंसर कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तो यहाँ पे काफी टाइम Yes लग sir. जाएगा तो आंसर करना शुरू हुए तो। Yes sir, हम ग्रुप के रिस्ट्रिक्शन रिमूव कर देंगे and students have the chance to question any sort of answer related to the webinar. Okay, एंड thank you for ऐड अस इन दैट ग्रुप एज वेल, बिकॉज हम नहीं and है वहाँ पे। ओके सर आई विल एड इट। सर आई होप आपने स्पेसिफिक टाइम अपना निकाला हमारे इस वेबिनार के लिए एंड आई एम रियली 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 शो ग्रेटिट्यूड टू यू। जितनी होलिस्टिक अप्रोच के साथ आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया, आई डोंट थिंक सो कि अगर कोई और डिपार्टमेंट्स या फील्ड के होते तो आई थिंक सो, क्योंकि ये डोमेन ही ऐसी है जिसमें अगर आपने प्रैक्टिकल काम ना किया हो तो आप प्रैक्टिकल अप्रोचेस नहीं दे सकते स्टूडेंट्स को। Thank you, sir, for all these information and all the pieces of good advices. वैसे मैं यही कहूँगा कि हम पाकिस्तान को हमेशा एक पेसिमिस्टिक अप्रोच के साथ देखते हैं कि कुछ पॉजिटिव हो नहीं रहा एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर ज़ियाउल हक साहब कि आपने कुछ हमें ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्ट्स बताए जो कि पाकिस्तान में करंटली चल रहे हैं एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर द डॉक्टर अरफान साहब फॉर टेलिंग अस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्बन फॉरेस्टेशन एंड सोशल फॉरेस्टेशन, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ये टर्म्स ही पहली बार सुनते हैं। बीइंग अ बॉटनिस्ट मैंने खुद पहली बार सुना था जब मैं टॉपिक को डिस्कस कर रहा था सर के साथ। तो बात ये है कि इवन देन हम प्लांट फील्ड्स के होते हुए भी इन चीज़ों से आगाह नहीं हैं और ये हमारी डेफिशिएंसी है जिसे हमें रिमूव करना होगा और हमें एक्शन से अपनी कम्युनिटी को इम्प्रूव करना होगा। थैंक Yes, यू सर फॉर we योर are टाइम we are doing that, एंड and your आई platform is होप doing सो that दिस as सेशन well. वुड I should ओके mention your सर थैंक platform. यू। That is good for awareness. I think this session like this, that they will create awareness among the students. And just a one minute, if I can give an example. I'm working as assistant superintendent in ZA Hashmi Hall. Maybe the students of UF, they are well aware of that hostel. On the right side, on the left side of the hostel, there are the room which are facing the sun all the day. So when I took the charge as assistant superintendent, I planted the trees in the row there, and now it's, I think, third year for those trees, or maybe second year for those trees, and they're growing. And when they will be a little bigger, they can overcome the heat from that side coming in the hostel. So a little examples and little work you can do, maybe starting from your home and from your street as well. ओके सर। सर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का वैसे सवाल होता है कि Mhm. हम पाकिस्तान में रहते हुए बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और गर्मियों में स्पेशली, तो सर जो हम पौधे लगाते हैं वो सूख जाते हैं। सर उसका बस एक सॉल्यूशन आप बता दें कोई हमें कि हम किस तरह, क्या हम ऐसे पौधे लगाएं जिनमें कम केयर करनी पड़े, फॉर एग्जांपल जिस तरह के ड्राई प्लांट्स होते हैं, या फिर हम कोई और इफेक्टिव मेथड यूज़ करें वैसे। ये सर प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन है जो मेरे माइंड में आया इस सेशन के बाद। If I would give an example about this, definitely जब मैंने बात की थी कि हमें इसका solution क्या है, तो we must go for the resistant plants. अगर हम drought की बात करें तो drought resistant plant लगाने चाहिए। और better drought resistant plant कौन से हैं? जो हमारी local species हैं which are thriving here, जो हमारे local species हैं, they can better tolerate. जो भी हम foreign material लेके आएंगे, that would be little bit less resilient to our environmental condition. So local species जो tree की हैं, they can thrive better, including जैसे सर ने बताया कीकर है जो कि thrive कर सकता है। इवन आजकल जो एक आई डोंट नो उसके बारे में कुछ डिबेट भी है, आई थिंक सर बेटर बता सकते हैं। कोनोकार्पस जो है, दैट इज क्वाइट हार्डी ट्री। आई डोंट नो कि उसके कुछ नुकसान है, आई डोंट कि शायद वो उसमें सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स ज़्यादा रिलीज करता है, वो साथ में किसी प्लांटेशन को होने देता, मे बी, मैंने ऐसा सुना है। लेकिन दैट इज क्वाइट हार्डी, और जहाँ भी उसको लगाएंगे, पानी दें कुछ ना दें, दैट कैन सर्वाइव।
सो देयर आर सम ट्रीज। और कुछ एक स्टूडेंट पूछ रहे थे एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए बेटर ट्रीज कौन से होते हैं। तो एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए बेटर आई थिंक इरफान साहब भी बता सकते हैं। डेफिनेटली वो ट्रीज होंगे जो कि एवरग्रीन ना हो, डिसीडुअस हो, जो कि अपने पत्ते सर्दियों में गिरा देते हैं, गर्मी में नई वेजिटेशन लेके आए। जी, उसमें जैसा जो मैंने पौधों के नाम पहले बताए थे, इनको 4-5 स्पीशीज जो हमारी कॉमनली यहाँ पे चल रही हैं, उसमें पॉपुलर, सिम्बल। अब डिपेंड यस करता है कि आपका एरिया किस तरह का, जैसे किक्कर है, शीशम है, ये भी चल रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका एरिया कौन सा, उसके हिसाब से हमने उसको सिलेक्ट करना है। नंबर 2, ये जो सवाल था कि पौधे वो सूख जाते हैं, और जिस तरह अभी जिया साहब ने हमने हमारी लोकल जो इंडिजिनस स्पीशीज है उसकी बात की है, तो हमारे पास तो खुद अपना इंडिजिनस लोकल फ्लोरा ही माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त है। तो हमें कहीं बाहर से लाने की जरूरत ही नहीं है। आप अपना ये थल का एरिया देख लें, थल एक जो एक ब्लेसिंग है। आप देखें जितने भी आपके डेजर्ट है, थल उसमें सबसे ज्यादा आबाद है। तो रीजन क्या है कि आप हम एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं, जब सबसे मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर क्रॉप ग्रोथ इन पाकिस्तान इज वाटर। अगर पानी हो तो हमारा चोलिस्तान भी आबाद है। तो पानी तो मेन इशू है। तो अगर घर के बाहर पौधा लगाते हैं वो सूख जाता है, तो वो तो हमारी अपनी ही गलती है। उसको तो हमने यस डेफिनेटली पानी नहीं दिया, हमने पौधा लगाया तो उसको सुखा दिया। यस तो अगर डेजर्ट में है, तो मैं अभी भी कल से एक डेजर्ट वाले प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। पहले हमने मुझे बाई चांस मौका मिला, मैंने डॉक्टर फारूक साहब ने एक नूरपुर फार्म में प्रोजेक्ट किया था सोशल फॉरेस्ट्री का, एग्रो फॉरेस्ट्री का। तो वहां पे तो बहुत ज्यादा है, अब स्कोप है वहां पे। यकीन करें, लोगों ने ग्राम्स लगाने कई जगह छोड़ दिए हैं, और वो ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं, और 1 एकड़ से 5-5, 6-6 लाख साल का वो कमा रहे हैं बाद में। वहां पे इवन उनके लीव्स हैं, वो ये ब्रिक्स वाले हैं, वो लेके जाते हैं, वो वहां पे सेल हो रहे हैं। तो थल में ये चेंज आई है, ये सोशल फॉरेस्ट्री की वजह से आई है। और वहां पे जहाँ आपके पास एक बहुत सारे जो इंडिजिनस ट्री स्पीशीज है, उसमें एक जिसको हम फार्मर कभी फरमान बोलता है, कोई खग्गल बोलता है, कोई फ्राश बोलता है, ये टेमरिक्स। ये एक इसको टीक ऑफ द डेजर्ट, सहरा का सागवान बोलते हैं। तो हमारे पास तो अपनी लोकल ये जिजिफस बेरी की स्पीशीज इतनी है, इंडिजिनस स्पीशीज जुजुब है, दूसरी है मॉरिशियाना है। तो हमारे ये वन वन देखें कम हो गया है। वन आपको कब्रिस्तान में कहीं कहीं नजर आता है। ओवरऑल ये बहुत डेजर्ट का एक जबरदस्त प्लांट और बड़ा जबरदस्त मेडिसिनल प्लांट है। इसको पीलू भी बोलते हैं। पीलू कभी आप अपने बुजुर्गों से पूछें, अब मोबाइल ने बुजुर्गों के पास बैठना कम कर दिया है, तो उनसे आप देखेंगे वो पीलू जो है प्रॉपर मार्केट में सेल होते थे, लोग खाते थे, इसकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस थी। तो हमने अपने इंडिजिनस फ्लोरा को प्रमोट करना चाहिए। कि मैं यूनिवर्सिटी की एग्जांपल दूं, जिया साहब को पता है हमारा एक प्रोका का एरिया है, वो किसी अच्छा हद तक वो ऐसा एरिया कि वहाँ पे हमारे पास केनाल वाटर भी नहीं है, और सैंडी सा ट्रैक है, इस तरह के वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो मैंने मेरे प्रोजेक्ट था एक, उसमें मुझे वहाँ पे भी काम करने का मौका मिला। मैंने वहाँ पे हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमने वहाँ पे ये फ्रॉस्ट का कम्पैक्ट ब्लॉक भी लगाया है, किक्कर का कम्पैक्ट ब्लॉक भी लगाया है। जो श्री श्री बड़ा इंपॉर्टेंट प्लांट है हमारा ड्राई जोन का, वहाँ पे उसको पानी कम चाहिए, तो वो हमने इसके कम्पैक्ट ब्लॉक लगाए हैं। तो अगर अगर बच्चे विजिट करना चाहें, तो मैं आपको बताऊंगा हमारा जो फॉरेस्ट्री का रिसर्च एरिया है, हमने वहाँ पे एक बड़ा जबरदस्त आर्बोरेटम एस्टेब्लिश किया है। हमारे पास 60 से 70 ट्री स्पीशीज वहाँ पे लगी हैं, इंडिजिनस भी लगी हैं, एक्सोटिक भी लगी हैं। आप आके विजिट कर सकते हैं। कि एक तो आप अगर अपने फार्म लैंड पे लगाना चाहते हैं, तो हम आपको बताएंगे, हमारा फील्ड स्टाफ भी बताएगा कि ये एक कितने साल में इसकी ग्रोथ कितनी होती है, अगर आपके पास कैनाल वाटर है। तो अभी मेरा टाइम की शॉर्टेज के हिसाब से मैं इतना ब्रीफली कहूंगा, अगर कोई विजिट करना चाहे तो हमारे पास बड़ा जबरदस्त वो एरिया है। हमने मैक्सिमम ट्री स्पीशीज एग्रो फॉरेस्ट्री की भी लगाई हैं, सोशल की भी लगाई हैं। उसको विजिट कर सकते हैं आप लोग आके। चलें सर, थैंक यू। बाकी मैं आपको ग्रुप में लाजमी ऐड कर दूंगा, ठीक है। आप जो आपको क्वेश्चन मोर इफेक्टिव लगता है, जो कि स्टूडेंट्स को लाजमी पता होना चाहिए, आप लाजमी उसका जवाब दीजिएगा। और हम स्टूडेंट्स को मजीद गाइड करेंगे इस तरह के इंटरेक्टिव सेशंस के लिए और वेबिनार्स के लिए। चले, बट बच्चे आई विल सवाल करते रहे, डेफिनेटली हम इस से अब सुबह थोड़ा रिप्लाई करेंगे। अब एक टाइम जिस पर लग गया है, तो इस आहिस्ता आहिस्ता रिप्लाई कर देंगे, कोई इशू नहीं है। हमें विजिट भी ठीक कर सर। सकते हैं बच्चे, कोई इशू नहीं है। ओके सर। सर आई विल डेफिनेटली से कि स्टूडेंट्स को एक चीज़ जो मुझे एक्सपीरियंस हुई है और मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी कहूँगा कि आप काइंडली इंटरेक्ट किया करें प्रोफेसर्स और टीचर्स के साथ। दे आर रियली फ्रेंडली, यू जस्ट नीड टू इंटरेक्ट विद देम, जस्ट ब्रेक द आइस। डेफिनेटली, हम तो बच्चों को क्लास में गए सवाल करें, वहां नहीं पूछते हैं। तो इंटरेक्ट करना चाहिए, अच्छी बात है बच्चे बाहर यहाँ पे होता सवाल है, कर रहे हैं। ये बात है। यस सर। सर बाकी आपके लिए हम सर्टिफिकेट्स अरेंज किए हैं जस्ट बिकॉज यू हैव सो मच। हालांकि हमारे सर्टिफिकेट की मैं अभी यही कहूँगा कि उस हद तक वर्थ नहीं है जितनी सर्टिफिकेशंस आपके पास हैं, बट स्टिल एज अ टोकन ऑफ लव एंड एज अ टोकन ऑफ फॉर योर स्पेंडिंग सम टाइम विद अस,
हम आपको कुछ सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करना चाहते हैं जो हम आपको इस सर्टिफिकेट की सूरत में सेंड करेंगे। उसके साथ साथ बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने ज्वाइन किया है, यू हैव अ चांस टू विन अ क्यूआर कोड ई सर्टिफिकेट। हमारा सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड है हमारी फेसबुक अकाउंट पे, तो अगर कोई वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो वो भी हम करवाने के लिए अपॉर्चुनिटी देंगे। और इसके साथ साथ आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ और अपनी कैबिनेट का मेंबर बनाने के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार and I hope so this would be the first step which would be the most effective one in future, and we would provide those Pakistan a really green and better future. Thank you. Okay, ji, thank you. Thank you.